A flurry of runouts then for New Zealand have basically enabled Pakistan to victory. Let's not forget they have won the series now 3-0, and their fielding, something that we all spoke about, was top-notch in today's match. Hello and welcome to Inverex Solar Energy Pitchside Show. Well, a huge congratulations to Pakistan because they have won the series 3-0. It was important for them to win today just in order to ensure that they have sealed the series. We saw what happened in the T20s as well. They got very close to a point, but in the end, you saw some brilliant performances by New Zealand, by Darren Mitchell and everybody else. But not to be today. Today, they were pretty much right on the money in terms of all the departments that we saw, the batting, the bowling, and more importantly, the fielding. Because we're talking about Pakistan's bowling, it's a much talked about aspect of the Pakistan cricket side. I've got with me the bowling coach of the Pakistan cricket team, Umar Gul. Thank you so much for joining us. And alongside him, my lovely friend, Sikandar Pak. That's the way I'm going to introduce you. Sikandar, Thank you. आज आप हमारे मेरे co-anchor भी हैं, आज आप मेरे दोस्त भी हैं, आज आप expert भी हैं. You're all in one. हम मिलके खा जाएंगे इनको. हाँ, मिलके खा जाएंगे. All yours. All yours. बड़े हम आपसे grilling questions पूछने लगे. नहीं चले, ये तो हो गया. Thank you so much, उमर भाई, आपने हमें join किया. पाकिस्तान की bowling attack perhaps ऐसा है जिसके बारे में सारी दुनिया बात करती है. अगर हम रैंकिंग में देखें या अगर रेट करें तो इट इज़ परहैप्स वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट इन द वर्ल्ड जस्ट इन टर्म्स ऑफ द फास्ट बॉलिंग बैटरी दैट वी हैव. आप उनके सबके साथ काम कर रहे हैं एंड हु बेटर टू हैव देन यू. आई मीन समबडी हु यूज्ड टू नेल दोज यॉर्कर्स वाज नोन एज द बुलडोजर. तो मैं जानना चाहती हूँ कि अभी तक जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं उनका क्या प्रोग्रेस रहा है, क्या चीज़ आपने नोट की है कि इस एरिया को इम्प्रूव करना है. सो आई जस्ट थ्रो सम नेम्स एट यू एंड देन यू कैन टेल मी कि जी अच्छा ये इस पे ये काम करें. लेट्स स्टार्ट विद शाहीन बिकॉज ही इज द लीडर ऑफ द पैक. आई थिंक शाहीन की जो सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो अपने फील्डर्स का उसको आइडिया होता है, कंडीशन को बड़ा अच्छी तरीके से अडॉप्ट करता है. मैं सबसे जो पहली मिसाल दूंगा आज की जो कंडीशंस थे. आई थिंक आज जब मैंने उसको देखा काफ़ी सरप्राइज हुआ. उसकी जो थिंकिंग है, जो प्रेजेंस है ऑन द फील्ड. पिच स्लो था और उसने जिस तरह के अपने ऑलियन नए बॉल के साथ इवन ही वाज बॉलिंग विद द विंड और बॉल उसका नेचुरली अंदर आता है, लेकिन उसने जो फाइन लेग अपना किया था काफ़ी वाइड कड़ा किया था. फिर जो मिड विकेट स्क्वायर लेग का फील्ड होता है सर्कल में, उसको स्ट्रेट मिड विकेट की तरफ किया था. तो इट्स मीन्स कि उसको अपनी बॉलिंग का पता है, कंडीशन का पता है. स्लो पिचेस है तो स्लो पिचेस पे बहुत कम होता है कि आपका जो बॉल है वो फाइन जाता है, नॉर्मली जाता है, स्ट्रेट जाता है. तो आई थिंक इसके वो काफ़ी क्लेवर है और अपनी फील्ड को बड़े अच्छी तरीके से यूज़ कर रहा है. और जो बेस्ट पार्ट है वो इन्वॉल्व रहता है और ऑल द टाइम वो फील्ड पे होता है, इन्वॉल्व रहता है, हर चीज़ को मॉनिटर करता है. ख़ुद भी कैप्टन रहा है, कलंदर से उसने कैप्टनसी की है, जो कि आई थिंक उसके अपने परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छा है. और उसने पास्ट में भी शो किया कि उसकी जो प्रेजेंस है ऑन द फील्ड वो किस तरह उसकी परफॉर्मेंस में और उसकी टीम की परफॉर्मेंस में अफेक्ट करता है. लेकिन कोई ऐसा एरिया है जो शाहीन का आपने देखा हो जिसको आप कहें कि इस पे मजीद काम करना चाहिए? बिकॉज है तो वो शायद दुनिया के इस वक्त बेहतरीन बॉलर, लाइक ओपनिंग बॉलर न्यू बॉल के साथ उनसे शायद कोई बेहतर नहीं है लेफ्ट आर्म. लेकिन आप एज बॉलिंग कोच हमेशा देखते हो कि यार इसको और थोड़ा मजीद एक एरिया पे इम्प्रूव करना चाहिए, इस पे काम. कोई एक ऐसा एरिया या यू वुड जस्ट से दैट ही हैज टू कीप ऑन डूइंग मोर ऑफ द सेम? देखिए, देयर इज ऑलवेज रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट. लाइक आप हर टाइम पे जो ना अपने लाइफ के हर स्टेज पे इम्प्रूव कर सकते हो. बट द थिंग इज सो फार आई थिंक ही इज़ डूइंग वेरी वेल. और मेरे ख्याल से अगर मैं कहूँ तो उसको अपने जो डेथ के जो है उसको और इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि अगर वो नए बॉल के साथ तो माशाल्लाह ही इज़ डूइंग वेरी वेल. और आई थिंक पुराने बॉल के साथ उसको थोड़ा सा बहुत दोनों स्टम्प से और राउंड द स्टम्प से तो वो बहुत ही अच्छा है कि जो वो आता है राउंड द स्टम्प से उसकी यॉर्कर बड़े परफेक्ट होते हैं. लेकिन उसके जो ओवर द स्टम्प से जब वो आता है उसको थोड़ी सी पास्ट की जो इंजरी की प्रॉब्लम है उसकी वजह से, जिसकी वजह से वो क्लोज द स्टम्प नहीं आ रहा. अगर वो क्लोज द स्टम्प आ जाता है तो उसको जो ना अगेन वो इंजरी का वो एक साइकोलॉजिकली वो उस चीज़ से डरा हुआ है. आई थिंक उसको डेथ ओवर पे भी मज़ीद और काम करना होगा. जिस तरह आज उसने अच्छे बॉल किए, आई थिंक इन फ्यूचर मज़ीद वो इस पर और इम्प्रूव कर सकता है. उमर, बात करूंगा एज अ बॉलिंग कोच. जब से आपने ये जगह संभाली है, डिफरेंट सिनारियो से टीम गुजरी है और ख़ास तौर पे जो आप इनकी स्किल्स की बात करते हैं उनको आप पॉलिश करते हैं, लेकिन जो मेंटल टफनेस की ज़रूरत होती है
ऐसे विकेट्स हैं जहाँ विकेट शायद जल्दी ना मिले, आपको पेशेंस चाहिए होगी, या अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो सीरीज हुई वहाँ से बॉलर को उठाना, और हर बॉलर का एक अलग टेम्परामेंट होता है, तो किस तरह से ये काम करना पड़ता है आपको इंडिविजुअल बॉलर्स पे कि वो अपने आप में बिलीव छोड़े नहीं? आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे अभी मेरा उनके साथ इतना टाइम नहीं है कि मैं उनकी टेक्निकल चीज़ों पे काम करूँ या कोई और उनके एक्शन वगैरह पे काम करूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके उसके मेंटल जो गेम अवेयरनेस है, या जो आप कैसे कि मेंटोरिंग के लिए यहाँ पे मुझे जो टाइम मिला है। बाकी अगर लाइक मैं मिसाल दूंगा, वसीम की बात करूँगा, शाहीन की बात करूँ, हारिस की बात करूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ पहली दफ़ा मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हो रहा है एज कोच। अगर आप नसीम शाह की बात कर रहे हैं तो आई थिंक उसके साथ पिछले 2-3 सालों से मैं हूँ, उसके साथ काफ़ी मैंने काम भी किया है, और ही इज़ लाइक आप उसको देख कि ही इज़ मच इम्प्रूव बॉलर। उसके स्पेशली जो पहले साल में उनके साथ क्वाटा ग्लेडिएटर में था, उसकी लेंथ पे काम किया था। फिर उसके जो यॉर्कर थे, यॉर्कर पे मैंने उसका काम किया, उसके थोड़ा सा हल्का सा उसके तम वगैरह को मैंने यॉर्कर के लिए उसकी सीम पोजीशन को चेंज किया। आई थिंक ही इम्प्रूव्ड अलॉट। और बाकी ऑब्वियसली कंडीशन की लिहाज से जितना मेरे एक्सपीरियंस है, जो कंडीशन को यूज़ करना है, मेंटल लाइक गेम अवेयरनेस के बारे में उनके साथ टाइम टू टाइम बात कर रहा हूँ। जिस तरह के हमारे जो वनडेज में जो कंडीशन मिले हैं, आपने उनको किस तरह यूटिलाइज़ करना है, तो आई थिंक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो उनके परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन लाइक अगर आप ऑनेस्टली मेरे से पूछे कि उनके साथ टेक्निकली या उनकी बॉलिंग पे चेंज पे, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, और इन फ्यूचर इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो। आई थिंक ज़ैनब बिल्कुल सही बात है कि अगर आप नसीम के इकोनॉमी रेट्स देखें इस सीरीज में, और पिंडी में तो उन्होंने हद ही कर दी, सिर्फ 29 रन दिए 10 ओवर में और 2 खिलाड़ी आउट किए। बाउंड्रीज हार्डली कंसीड की हैं नसीम ने इन दिस एंटायर सीरीज। आई मीन देखा जाए तो एक तो वो जो 10 ओवरों में सिर्फ एक बाउंड्री कंसीड की थी, तो इट्स अ ह्यूज थिंग, बिकॉज यहाँ पे एज सच कोई इस तरह से कोई मूवमेंट एक्स्ट्रावेगेंट तो नहीं मिल रही बॉलर को अप फ्रंट के जी वो विकेट्स हासिल करें। चलिए ये बताएं वसीम जूनियर, उनकी भी थोड़ी सी बात करते हैं। नसीम एंड शाहीन तो सॉर्ट ऑफ carrying this attack forward, but there are other bowlers as well, and Pakistan is blessed in that sense कि जी हमारे पास options काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन वसीम जूनियर, उनके बारे में क्या कहेंगे? कौन सा एक एरिया पे किया है कि वसीम जो है काफ़ी अर्से से मैं उसको PSL में भी फॉलो कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ। जिस तरह मैंने अर्ली ऑन कहा कि काफ़ी मेरा उनके साथ इंटरेक्शन नहीं रहा, फर्स्ट टाइम उसके साथ मिल रहा हूँ। लेकिन जब हम पहले दिन हम आए कैंप में, तो उससे मैंने बात की कि आपका स्पेशली जब यॉर्कर करता है या पुराने बॉल से जब वो बॉल करता है, तो वो उसका जो ना हमेशा से आपने देखा भी होगा, उसके बॉल जो ना वो जब वो फिनिशिंग पे आता था, या तो लेग स्टंप को हिट करता था या लेग स्टंप के बाहर से फिनिश हो रहा था। तो उसके साथ थोड़ा सा काम किया है, और आई थिंक ही इज़ काफ़ी वो खुश है उस चीज़ के जो आप टारगेट पे जो फिनिश करना चाहते हो, यॉर्कर स्पेशली मिडल स्टंप पे, वो चीज़ उसके वापस आ रहे हो। उसको थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है कि जब आप रिवर्स स्विंग कर रहे हो तो आपके डायरेक्शन क्या होने चाहिए रिवर्स स्विंग के लिए, कि आपने अपने बॉल को कहाँ पे फिनिश करना है, आपने अपने बैट्समैन से कितना अवे आपने फेंकना है। तो आई थिंक उस चीज़ पे वो काम कर रहा है। बाकी टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा उनकी टेक्निकल चीज़ों पे काम नहीं किया, लेकिन जो मुझे लगे कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो उनके साथ हैप्पी और वो चेंज करना चाहते हैं, तो उस पे काम कर रहा हूँ। जी सिकंदर, बस एक छोटा सवाल यही था कि क्योंकि पाकिस्तान की, जैसे मेंशन किया ज़ैनब ने, कि इतनी ज़्यादा ODI सीरीज नहीं है अभी, हो सकता है अफगानिस्तान से 3 मैच मिले, तो इस स्टेज पे आप ना सिर्फ इस सीरीज को देख रहे हैं, कहीं ऐसा थोड़ी सी फोरसाइट रखिए कि इंडियन कंडीशंस में वर्ल्ड कप में कौन से आपका फास्ट बॉलिंग बैटरी होगी आपकी फर्स्ट चॉइस? टू बी ऑनेस्ट, अगर आप भी पेस बैटरी की बात करें, अगर स्किल वाइज आप बात करें, तो हर बंदे की अपनी स्किल्स है। शाहीन नसीम शाह की अपनी स्किल्स है, वो जिस तरह नया बॉल स्विंग करते हैं, या फिर मिडल फेज में वो बॉल करता है, या इवन एंड पे हम टोटली रिलाई कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम नसीम शाह और शाहीन पे रिलाई कर रहे हैं, स्पेशली डेथ ओवर में वो दोनों तो अच्छा कर रहे हैं। बाकी वसीम जूनियर की अगर आप बात करें तो उसको आप पिक कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए। वो आपके साथ फर्स्ट चेंज पे अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, प्लस उसके साथ थोड़ी सी ये कि बैटिंग के भी एडवांटेज है। गुड फील्डर आज उसने प्रूव किया किस तरह के एक अच्छा रन आउट किया, इतनी बड़ी बाउंड्री से, जो उसका जो शोल्डर है, इतना स्ट्रॉन्ग शोल्डर, बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा। फिर अगर आप एहसान की बात कर रहे हैं तो उसके अपने स्किल्स है, वो फास्ट है और फ्यूरियस है, जिस तरह उसने PSL में बात की है, बॉलिंग की है। तो आई थिंक हर बंदे की अपनी एबिलिटी है, और उस एबिलिटी के मुताबिक अगर आप देखें तो टू बी ऑनेस्ट जो अभी जो पेस बैटरी है, जो 4-5 बॉलर्स है, आई थिंक इसके साथ ही कैरी करना होगा।
इंसान को क्या चीज़ डेवलप करनी होगी और बिकॉज अभी हम एक ये भी राय आ रही थी कि ठीक है पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं, बड़ी अच्छी पेस है जो कि है, बट ऑब्वियसली अभी तो उन्होंने शुरुआत की अपने करियर की, तो इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। ऑनेस्टली अभी तक तो इस सीरीज़ में या पिछली सीरीज़ में भी अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी मैंने उसको सिर्फ यही कहा कि इट्स टू अर्ली फॉर हिम कि आप एकदम से सडनली आप आए और उसको चेंजेस लेके आ रहे हो, क्योंकि वो जिस परफॉर्मेंस पे वो सेलेक्ट हुआ, जिस तरह की उसने बॉलिंग की पीएसएल में, मैं हर मैच से पहले उससे ही बात कर रहा हूँ कि आप अपने जो आपके स्किल्स है उसके मुताबिक आप बॉल करो, जो आपकी एक एबिलिटी है कि हार्ड लेंथ से आप तेज़ बॉल करते हो तो आप टोटली जाओ तेज़ बॉल के लिए। लेकिन अगर आप फिर उनके इन फ्यूचर करियर की बात करें तो मेरे ख्याल से अगर आप उसके अपने पेस के साथ स्लोअर वन डेवलप करें और थोड़े से यॉर्कर पे और काम करें तो आई थिंक ही कुड बी वेरी लिटल। ठीक है, यॉर्कर और स्लोअर वन पे काम करने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन जाते जाते ये बता दें कि आज फील्डिंग में बड़ी एनर्जी थी, क्या क्या खा कर आए हैं क्या करके आए हैं? मतलब पिछले 2 वनडे से तो बहुत बेहतर थी आज, जिस तरह से रनआउट्स हुए, तीन रनआउट्स हुए आज मैच में। आज खिलाया नहीं, खाना रोक दिया इन्होंने। बोला जब तक नहीं करोगे नहीं मिलेगा। देखिए बिल्कुल आपने ज़ैनब सी क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि लास्ट जो 2-3 मैचेस में हम जो एक मिसिंग पार्ट था, हमारा जो थर्ड पार्ट था फील्डिंग का, उसमें हम थोड़ा से लाइक कर रहे थे, थोड़ा नहीं काफ़ी लाइक लास्ट मैच में हमने तकरीबन 23-24 रन हमने दिए, जो कि ना सिर्फ आपके टीम को ट्रबल कर सकते हैं बल्कि आपके जो बॉलर्स की परफॉर्मेंस है उसको भी ख़राब कर सकता है, क्योंकि जब आप किसी बॉलर को सपोर्ट मिलता है फील्डर्स की तरफ से, उसके अच्छे रन सिंगल को डबल को सिंगल में कन्वर्ट करते हो या बाउंड्री रोकते हो तो बॉलर और भी ज़्यादा अच्छे दिल से बार करता है और इनकरेजमेंट होती है। लेकिन बिल्कुल आई थिंक एक तो पहली बात ये है कि पहले 2 वनडेज में हमने अगर आप करें कि फील्डिंग अच्छी नहीं हुई तो इसके एक रीज़न ये भी हो सकता है कि काफ़ी अरसे के बाद पाकिस्तान टीम वनडेज खेल रहे हैं। एक तो वो जब आप T20 काफ़ी लंबे अरसे से वो T20 खेल के आ रहे हैं, फिर सडनली आप जब 20 ओवर से आप 50 ओवर पे आ जाते हो, मौसम भी थोड़ा से गर्मी थी वहाँ पे, कंडीशन थोड़ा से ये कि वो आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एक आध मैच लग जाता है, एनर्जी लेवल उतना नहीं था जिस तरह आज एनर्जी थी। मैं भी पिंडी में थोड़ी सी गर्मी डे टाइम, यहाँ पे नाइट टाइम में, तो जब आपकी गिरफ्त होती है तो सम टाइम फिर आपकी एनर्जी और बढ़ जाती है। लेकिन द वे जिस तरह आज लड़कों ने जो एनर्जी उनकी ऑन द फील्ड थी, जिस तरह फील्डिंग रन आउट किए, मेरे ख्याल से इट्स लाइक गुड साइन फॉर पाकिस्तान। चलें, थैंक यू सो मच उमर भाई फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट। आगे अभी कुछ मैचेस बाकी हैं। सिकंदर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप जाएंगे, आप रुकना चाहते हैं? नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। आप जाना, आप इनके, वरना मैं आपको रोक लेती हूँ अगर आप रुकना चाहते हैं। बट चले, थैंक यू सो मच। वो थोड़े सरप्राइज थे, उन्होंने कहा कि अच्छा मुझे भी जाना पड़ेगा, बट चले आप दोनों जो हैं जाएं और थोड़ा सा रेस्ट किया। बहुत आपने भी काम किया, आपने भी आज बहुत एक्स्ट्रा काम किया, तो आज तो आपका रेस्ट बनता ही है। चले, ऑन दैट नोट विल बी टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक। ऑन द अदर साइड विल बी जॉइन्ड बाय अ न्यू सेट ऑफ गेस्ट्स एंड विल बी लुकिंग एट द मैच इन मोर डिटेल। Back on the Inverex Solar Energy Pitch Side Show, and what a fabulous performance by Pakistan. They are now leading. Well, they won the series 3-0, and it should be attributed to a couple of things, especially the fielding. We spoke about that in our mid-show as well, that is something that Pakistan will need to take care of. Their fielding, hold on to the catches, the ground fielding. We always knew what their bowling attack can do, but it was just nice to see that the fielders have also come to the party. Now, also to the party I've been joined by Lisa Staleka and Grant Elliott. Are you guys liking the fact that I'm calling you with your full name? So are you happy? Happy? I've been called everything by you, so it's quite strange to be called by my full name. All right. If you want to go Grant David Elliott, that's fine as well. Grant David Elliott, Lisa Staleka, or is it Lisa Caprini Staleka. Caprini. Okay, Caprini. Tell me, where do you think, Caprini, where do you think, New Zealand, just from a New Zealand perspective, they did say that 280, 290 is what they're looking at. A lot of runouts in their innings. What happened? Look, I certainly think there was some miscommunication. I mean, the amount of opening partners that they've had over a period of time, and the first wicket that fell, Will Young, didn't necessarily help, and then Tom Blundell as well being run out. That kind of really does put
the foot on the brake from a New Zealand perspective. But I also feel that there was a period of time around that 23, 24 over, they weren't able to really get going. There was 3, 4 runs and over, and that's where the brakes were really put. And the fact that no dew came in meant that Pakistan and their spinners certainly enjoyed the conditions. David, Pakistan had certainly got that extra bit of energy today in the field. I mean, we spoke about that in the last 2 one-day internationals. Not really sure what they had for lunch or dinner or breakfast, but certainly seemed to be working because, you know, the kind of direct hits that we saw today, just the ground fielding, it just seemed like an overall uplift of the fielding game. Well, exactly what Caprini said about the middle stages and, you know, trying to actually limit the runs for New Zealand through those middle stages. It has to be backed up by fielding. And if it is backed up by fielding, well then, you know, the bowlers, if they're bowling that line and length, they can actually create pressure. And that's exactly what they did. They created pressure through their fielding. And when I looked at that Pakistan fielding, Mark Butcher made the comments on a few occasions. He said he was surprised at the Pakistan fielding because it can be either really hot or really cold. And today it was hot. So hopefully they can get into the change room and they can say, that's the standards, that's how we want to field. And, you know, we need to be consistent about it. They can't turn up in the 4th ODI and then create something which is subpar, because that was amazing what they did today. Well, speaking of consistency, there's one guy who's been super consistent for Pakistan in the one-day international format. He's been delivering for the last couple of years, just been scoring those hundreds, those 50s right at the top. I'm talking about none other than Imamul Haq. He's also our hero of the day. Hero of the match, brought to you by Inverix Solar Energy. Well, he's been somebody who's been paired with Fakhar Zaman, has done a fine job over the last few years. Another 90 today, works the caps really well, reads the length and is able to use those feet wonderfully well against the spinners as well. Yeah, the great thing... Hero of the match, brought to you by Inverix Solar Energy. Lisa, you were talking about Imamul Haq, just elaborating on his innings. What did you like about his innings today? The thing that really impressed me was probably the first 2 ODIs. He would have been disappointed that he didn't go on and bat for a long period of time, which he can do. And the fact that Fakhar Zaman has been able to pull out those big hundreds. Whilst he didn't get the triple figures, he certainly showed that, yep, I'm here to play as well. The top order of Pakistan is going really well. And like you said, he used his feet really well, found the gaps. Again, disappointed that he didn't go on, but he still got 2 ODIs to get that triple figure. And what's also nice for him, and I guess for Pakistan cricket, is that he seems to be creating certain records. It's time for a Start Attack. Start Attack, brought to you by Inverix Solar Energy. Well, he was 10 short of his 100 today, but you can find him in this list of most centuries for Pakistan in one-day international. He's got 9 centuries now, and that's been perhaps, David, when you look at Imamul Haq and his career, the one thing that has really stood out is the fact that he's been able to score those big hundreds, because it's one thing scoring 50s, but when you're able to convert, Imamul Haq has been known for that. He's still early on in terms of getting into the double figures of scoring those hundreds, but, you know, he's got 9 already, and he seems to be somebody who looks to build his innings. Yeah, I think Pakistan have got a great, you know, top 3 now. When you look at Baba, you look at Fakhar, and then you look at Imam. You've got 3 players there. Baba's on 1700s, Fakhar's on 10, and then you've got Imam on 9. But I think the most amazing thing is when they brought up the stats on the ODI batters of the world rankings at the moment. And you had Baba at 1, Fakhar at 2, and then you had Imam at 5. And I was like, where did he come from? You know, he almost goes unnoticed, a little bit like Fakhar Zaman. He just goes about his work, he plays conventional cricket, and he gets the returns. So
if Pakistan can have Fakhar and him going at the top, and then the foundation or the solidarity of Baba coming in at 3, they've got 3 top players, world-class players, that they can really build something and build their team around. And I think it's a luxury. There's not many teams that have got that at the moment. A lot of teams are looking for combinations, including New Zealand. I think they're looking for their top 3 combination because Kane Williamson's out. They're not too sure who the opener is going to be. So Pakistan are in a strong position, and that's because of Imam. I think he's a class player, so is Fakhar. He brings something different as a left-hander, aggressive, and then you've got the consistency and world-class nature of Baba. Caprini, he's 51, averaging 51. He's not 51, he's averaging 51 in one-day internationals. And more often than not, you know, you'll always find players who sort of get overshadowed by, you know, the big names around them. There's Babar Azam, there's Fakhar Zaman, guys who already play T20 cricket. Imam ul Haq is somebody who's not been, you know, a regular feature in that T20 or T20 side, but he seems to have mastered at least one format, and you've got to give credit to him because it's one thing, you know, just being there, but also being so consistent at this level. Oh, one thing I noticed about that list that we saw was the amount of games that him and Fakhar have played to be able to get the amount of centuries that they have. So that is an indicator that these guys love to bat. They love to bat together and they understand the conditions well, and they're converting at such an early age in their career, so to speak. So the fact that you would expect them now to play for an even longer period, I'm a little bit scared to see what number they'll finally get to, because they are showing that they are going to be consistent for a long period of time in international cricket. Well, that is the name of the game, actually. When you talk about consistency, you need that from your top order as well. Later on, World Cup is coming up in this particular format, so they'll be requiring all their big guns to fire. But, yeah, that was the start attack for you. Stat Attack, brought to you by Inverix Solar Energy. Well, it was a visual treat for all the fans that were coming into Karachi. Pakistan has won the series 3-0. They came to support their respective, you know, favourite players and favourite stars. Let's hear from them now what they have to say. It's time for Gupshup with Mehak. Well, Pakistani cricket fans must be extremely pleased today with Pakistan's continuous terrific performances as they go on to clinch the series against the Black Caps by 3-0. And you know, it's been different conditions, a different ground, and of course a different new crowd altogether. So let's go speak to them. आप स्टेडियम में आए और आपने पाकिस्तान को लाइव सीरीज जीतते हुए देखा, तो कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया. It's a long time कि कोई टीम पाकिस्तान आई थी और बड़ा मज़ा आया कि we have won the match as well. So amazing. And who was your favourite performer from today? Of course, Babar Azam played well, and with Rizwan and all the bowlers performed well, so good match. अच्छा, पाकिस्तान की बॉलिंग तो अच्छी है ही है, लेकिन इस सीरीज में उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही है. जी, पाकिस्तान की बैटिंग जो है टॉप 4 जो है सॉर्टेड है, कब से काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे आप देखें फ़खर जमान, इमाम उल हक तो बेस्ट ओपनर्स हैं पाकिस्तान के आफ्टर सईद अनवर और आमिर सोहेल. उसके बाद बाबर आजम और रिजवान टॉप परफॉर्मर हैं. तो लेट मिडल ऑर्डर पाकिस्तान के थोड़े से इश्यूज़ हैं, लेकिन बैटिंग तो काफ़ी अरसे से बहुत अच्छी चल रही है. और बॉलिंग में क्योंकि फ्लैट ट्रैक्स हैं तो थोड़ी सी मुश्किल है, दुश्वारी है बॉलर्स के लिए. लेकिन जिस तरीके से नसीम शाह कंसिस्टेंटली लाइन और लेंथ बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो उस वजह से बॉलिंग भी बेहतर हुई है इस दफ़ा. आज आप स्टेडियम में आए, आपने मैच लाइव देखा, तो आपको जनरली क्रिकेट देखने का शौक है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा है. कितने सालों से क्रिकेट देख रहे हैं? जब से शादी हुई है. अच्छा, इसकी कोई स्पेसिफिक वजह है जब से शादी? एक्चुअली हमारी पूरी फैमिली को क्रिकेट से बहुत दिलचस्पी रही है. फिर मेरी शादी भी एक टेस्ट क्रिकेटर से हुई, ओपनर रहे बहुत मशहूर सादिक मोहम्मद साहब. तो बस अब तो ज़िंदगी में क्रिकेट ही ओढ़ना बिछोना है हमारा. तो आप इधर पाकिस्तान को सपोर्ट करने आई? ऑफ कोर्स. तो आपको आज उनकी परफॉर्मेंस कैसी लगी? वो सीरीज़ जीत गए हैं इस जीत के साथ, तो इसके बारे में आपकी क्या सोच है? आई थिंक हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है. बहुत सारे यंगस्टर इसमें हैं और काफ़ी टैलेंटेड बच्चे हैं, और उम्मीद है कि ये लोग अगर इसी तरह खेलते रहे तो वर्ल्ड कप जीतेंगे इंशाल्लाह. And with today's victory, Pakistan goes on to clinch the series 3-0. However, there are still 2 more ODIs remaining to be played. So let's see if Pakistan can go for a whitewash or if New Zealand can make a comeback and try to get some wins under their belt.
Thanks, Mehek. Thanks, David, Caprini, everybody in the team. Thanks, Abbas, as well. Abbas, exactly. It's a team. It's a team here. Thank you so much for your thoughts. But we've still got 2 more one-day internationals. It's after 12 years that Pakistan has won an ODI series against New Zealand, which is fantastic news for them. They've still got 2 more one-days. Remember, the incentive for them is that if they do go on to win 5-0, they become #1 in that ICC rankings chart. All right, off day tomorrow, and then we'll be meeting you day after at 2:45 p.m. very much here in the National Bank Stadium in Karachi. Fantastic game today. 3-0 is what it looks like for Pakistan. I'm sure the fans are jubilant as well. Everybody in the camp as well. All smiles all together. Until next time, it's goodbye from all of us. The keeper has called for it. The safest hands. Man with the glove takes it. Oh, smashed. Got him! Inside edge! Knocked him over! Good call that from London. Oh, he's gone. His first 50 in one-day international cricket. Straight away, top of off. The change worked.